Hello friends, today we have our esteemed guest who is highly experienced in sales domain. He is heading sales for very large organization, very reputed organization, and he has cross-functional industry-wide exposure with technological advances in skilling and development. So let's hear it from him. He's going to talk about sales as a career and what are the factors you should consider if you want to be in sales. So welcome Sandeep ji on board and tell us your story. Thank you, Kiranji. Our family was a business family, and then when I started this career at that point in time, we did not have many choices. Today also, when people talk about choices, in 11th standard or 12th standard, I remember in 80s, I'm talking about 80s, 83, 85, 88. Yes. That is the time when, it was either become an engineer or chartered accountant. That was the only thing which was there, and doctor banna, it was very high at that time. Yeah. Today also, doctor is very expensive, but a lot of people are affording it. Right now, a lot of people get to Georgia and Russia and all that for becoming a doctor, but still affordable. A lot of loans are available. That point in time, it was engineering, or engineering was aspirational. Absolutely. Today, engineering has become what we had at that in time, BA, BCom. तो हमने BSc कर लिया, BCom कर लिया तो बहुत अच्छा है. उस तरह से हम चले थे. Engineering unfortunately didn't get through again because of donations, when donations started at that time. But the career-wise, ऐसा कोई exposure नहीं था. There was no exposure which we had. So the only thought was that what is the family background, right? And to what should I do? Our family background was more 2-3 generations were into agency kind of a business in South India. So bringing material, trading material, and taking orders for somebody. That was the kind of, so basically typically sales background. Okay. And so enterprise, so we are Gujarati, so enterprise to Gujarati mein hota hi hai. Right. But then, so dynamism, because we are in sales, in generations together, and the enterprise which we had, all put together, I thought that, एक जगह पे रहूंगा तो मेरे को काम नहीं चलेगा. I cannot stay in one place, first of all. So from that angle, I said that, what is the best thing which I could do? Engineering नहीं मिला तो BSc, so then what should I do? So from there I went into saying that okay, then BSc किया है तो let us get into business. कर नहीं सकते हैं, पैसा उतना है नहीं, so let me get into research only. Business बहुत लोगों ने कर लिया. Let me be the first to get into research in my family. So I did my post graduation in science. That is the time when the family background went down, textile businesses went down, and पैसा वैसा खत्म हो गया. पैसा खत्म हो गया तो फिर करने का क्या है? तो then I changed my career. Thought from there, research छोड़ के MBA करें. I tried. That was the initial stages when everybody was talking about MBAs in good institutes. I remember MBA was like a status. It was a big status. Big status. Somebody भी कहीं से भी MBA कर लो तो बड़ा status हो जाता था. आज it is a common thing for everybody is an MBA. My choice was research से फिर मैं change हो गया. मैंने बोला कि यार dynamism है, MBA करने का कोशिश किया, नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए? एक जगह पे रहने से तो कुछ होने वाला नहीं. So then I moved and I said that let me get into sales. That's the family background. Yeah. And so I came into sales. I started as a salesman, ground level. That is how I started my career. So whoever is, parents who are listening to this, or children who are listening to this, one, I would definitely say that they should have that inclination in moving around. मीटिंग मोबिलिटी होना चाहिए. मोबिलिटी होना चाहिए तो फिर उसके लिए lot of give and take होता है. There are a lot of advantages in staying one place. People keep telling me that बैंक का प्रोफेशन है ना, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें स्टेडीनेस है और काफी प्लानिंग करके लाइफ निकलती है. But I would go and say that okay, that life is boring. Today's banking is completely different than what it was earlier. They cannot stay in one place. Bankers are also being transferred. So mobility is something which I would say that, and meeting people.
biggest thing which is needed is interest in meeting people. Simple. Right. So संदीप जी, अगर कोई फ्रेश स्टार्ट करता है सेल्स, तो उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? Oh, that's quite simple. सेल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली इज दैट कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेच के आओ. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज. वो तो सेल्स है तो किसी को भी समझ में आ जाएगा. इंडिया में एक्चुअली इंडियंस ये समझते हैं, नॉर्मली इंडियंस ये समझते हैं कि सेल्स यानी कोई भी कर लेगा. ऐसा है नहीं. इट्स नॉट सो सिंपल. बट एक इंक्लिनेशन अगर है कि you want to sell this to somebody, you should be able to do that. Few things which are required for that is understanding what you are selling. Most important, generally people जब when they start selling, वो कुछ भी बात कर लेते हैं, बोलते हैं कि बक करने से सेल हो जाएगा. बोलने से सेल नहीं होता है. सिर्फ बोलने से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, क्या बिजनेस प्रॉफिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो समझ आना चाहिए. एंड थर्ड थिंग इज दैट सामने वाला क्या चाहता है वो भी तो समझना चाहिए. अब कुछ आपको कॉल आते होंगे, बहुत कॉल आते होंगे आपको, ये ले लो वो ले लो, खास करके क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स और इंश्योरेंस. आज के तारीख में ये बहुत ज्यादा, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या. कुछ भी बोलने से नहीं होगा. बट दोज आर कोल्ड कॉल्स. द पीपल हु अंडरस्टैंड कोल्ड कॉलिंग, people who want to understand this, people have some inclination in terms of saying that let me understand his requirement and then let me fit my product. That is the kind of thing which will probably get somebody into those kind of good careers. Okay. Also, in addition to what you said, understanding about your competition also, because when you are talking to your customer, of course, and if they try to compare your product with competition, you should know where you are strong. So as a person gets more experience, become more successful in career, and as they start growing up in corporate ladder, what is the topmost position one can aim for? Sky is the limit, I think. At a stage, एक स्टेज पहुंचने के बाद कोई भी करियर हो, सेल्स हो या कोई इंजीनियरिंग, प्लांट, फैक्ट्री, बैंक, कहीं भी काम करते हो, आफ्टर 10 years of your hard work, you need to plan your career, whichever field you take. So sales also is similar. You reach to a regional manager or a zonal level manager, and then from there, if you are planning your career well, if you are establishing your contacts well, because sales में है तो आप planning करोगे, because आपका सेल, रोज का सेल आपको planning करना है. If you plan your sales daily, that is well, you implement that into your life, you plan your career. To plan your career well, MD, CEO, आप कुछ भी बन सकते हो. कुछ साल के बाद आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो. It all depends how it unfolds. मेरा एग्जांपल मैं दूंगा तो मेरा एग्जांपल मैं दूंगा तो वर्ल्ड कैसे चेंज होता है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा. MD, CEO बन सकते हैं. आप मुझे पूछ सकते हो कि मैं MD, CEO बना कि नहीं बना, मैं CEO हूँ कि नहीं है. तो डिपेंड करता है कि मैं कौन सी कंपनी में भी काम करता हूँ. तो मैं जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वहाँ पे ह्यूजली एक्सपीरियंस्ड CEOs चाहिए, राइट. एंड IIM अहमदाबाद, IIM दोस काइंड ऑफ MBAs जो हैं वो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है आज. So what happens going forward is that you need to look at how the things are changing in the corporate level also. What are their views? What is that which they are looking at? That's the career planning which I am talking about. If you know that the corporates in different industries are looking at a certain background, work towards it, build up your skills accordingly. So ऐसा नहीं है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया या लॉयर बन गया तो करंट लॉ या करंट कंपनी लॉ उसको समझना चाहिए, उसके लिए पढ़ना चाहिए. वो है, दैट्स अ प्रोफेशन. सेल्स को प्रोफेशन करके मानने वाले बहुत कम हो गए हैं. प्रोफेशनल डॉक्टर कहलाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हैं, लॉयर कहलाते हैं. सेल्स मैनेजर्स आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स, प्राइमरीली बिकॉज you need to upgrade your skills. For example, I'll tell you, today when I started in sales, there was no computer. There was absolutely no computer. हम कैलकुलेटर पे भी स्ट्रगल करते थे.
Right. Today, at my level or my colleagues, my peers, if I look at it, age-wise also, in different industries, I have my friends. I am faster on Excel and various other things, various applications than them. Yeah. I know intricacies of these applications much more better than they are knowing it. If they get stuck at one place, they get stuck. They need IT help. I don't need that. I tell IT क्या problem. तो स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है. यानी आज IoT ये सब आ गया. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोइंग के अंदर में काम करना है एंड आप सेल्स प्रोफेशन में हो, आप वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं समझेंगे तो आप क्या बेचोगे? So when I say product knowledge, you need to get into that. सॉफ्टवेयर कंपनीज है, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उसमें भी सेल्समैन चाहिए. उसके लिए आपको वो सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए. So anybody who is got into a software engineering, supposing, he also can get into sales. Absolutely, sales requirement is now becoming, it was a science, now it is recognized as a science. So every industry where there is a niche sales which is happening, okay, people only know today क्या हो, problem कहाँ पे है कि people only know about Eureka Forbes and insurance sales. But as I said, Boeing sales, aircraft, spacecraft sales. Elon Musk is now selling his crafts. We in India have started selling missiles. Salesmen चाहिए उसके लिए. Right. Most of our politicians are salesmen. If you believe that. Yeah, right. But that apart, as a profession, there are industry का कोई limitation नहीं है, position का कोई limitation नहीं है. It is absolutely up to the individual कि आप क्या करना चाहते हो, क्या प्लानिंग करते हो, आप कैसे लेके जाते हो. Very nice. So किस तरह का एजुकेशन रोड मैप बच्चों ने फॉलो करना चाहिए? तय करना पड़ेगा कि आपको पहले तो अगर सेल्स में जाना है एंड आप तय करो कि आपको सॉफ्टवेयर साइड जाना है, हार्डवेयर साइड जाना है, यानी इंजीनियरिंग साइड में अगर आपको जाना है तो देन those kind of products का applications and knowledge, then you take engineering, mechanical engineering or mechatronics or software engineering, computer science, do that and then get into sales. Those are niche sales. Technical. But general sales, technical. So थोड़ा बहुत technicality उसमें आ जाती है. Not that the person who has done BSc or MSc cannot do that. He can also do it, but he will have to start at a lower level. Right. And then he can grow. So 2-3 साल extra लगेगा, but he will be able to do it. So career-wise, I think whatever he wants to study, he can study. नंबर में अगर बहुत सारे सेल्समैन नंबर में अच्छे होते हैं या कुछ सेल्समैन नंबर में अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है कि सेल्समैन आर ऑलवेज गुड इन नंबर्स, दे कैलकुलेट वेरी फास्ट बिकॉज सामने को चिपकाने का होता है. ये जो बात है ना चिपकाने का, दैट्स नॉट रियली सेल्स. It is more in terms of convincing the other person what is his requirement, making him understand what is his requirement, what is the need. That's the piece which is there. So whether it is technical requirement, okay, so even if it is water purifiers, I would say that okay, those water purifiers, Eureka Forbes, they are more successful salesmen if they get into technicalities, understand it and explain and demonstrate to the customer. So it is not only chipkana. It's clear understanding. And general sales में है, so there are big opportunities. आप जनरल इंश्योरेंस के अंदर में भी आप जनरल मैनेजर से CEO बन सकते हो. बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं आज तो. टुडे फॉर द चिल्ड्रन द मार्केट हैज ओपन्ड कंप्लीटली वाइड. हमारे जमाने में मनमोहन सिंह, ऑफ कोर्स सेल्स इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. आई मीन in our times Manmohan Singh didn't happen. He happened afterwards. Right. So the markets opened afterwards. Now people have a lot of exposure. I am 100% sure today whoever is listening to this, okay, if he Googles it, just Google, okay, any industry you pick up and you have sales managers there and grow from there. After that certain level it is just people management. आप पीपल मैनेज तो सेल्समैन हो तो पीपल मैनेज करना पहले से जानते हो. So बच्चों ने क्या कोर्सेज करना चाहिए, क्या आई मीन एज यू राइटली सेड, ओके टेक्निकल सेल्स है तो टेक्निकल बैकग्राउंड का एजुकेशन हो तो इट विल हेल्प देम. सेकेंडली नॉन टेक्निकल है तो कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा. बट देन
suppose if any employer is recruiting salesperson, generally what will they prefer? What education they will prefer? So generally they prefer any graduate engineer with an MBA. Graduate and engineer. MBA also. Yeah, so MBA, then depending on which institute he has done MBA, the entire discussions and negotiations happen there. Mm-hmm. Of course, he will get a job. Okay, कहीं से भी MBA कर लिया तो he will get the job, but negotiation ज़्यादा होगा. Right. So if you are from IIM Ahmedabad, you can demand what you want. But if you are MBA from any unknown institute in a local institute, then जो ऑफर किया जाएगा वो पहले एक्सेप्ट कर लो, फिर उसके बाद आपका स्किल दिखाओ तो आप एट पार हो. फिर बेसिक इंजीनियर एंड MBA इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. बट कोई स्टूडेंट स्टूडियस नहीं है, यू नो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरीबडी शुड बी स्टूडियस. पढ़ना चाहिए और बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना तो चाहिए डेफिनेटली, हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए. बट देन देयर इज अ डिफरेंस. एक स्टूडेंट है जो स्टूडियस है और 90+ लेके आता है, एक स्टूडेंट है जो 70+ लेके आता है. उसके लिए करियर खत्म नहीं हो जाता है. 90+ वाला भी सेल्स में जाएगा, 70+ वाला भी सेल्स में जाएगा. एंड ऑफ द डे वो कहाँ से MBA करके क्या नेगोशिएट करके लेके आता है, वो अपने अपनी स्किल के ऊपर डिपेंड हो जाता है. So maybe as I have done only MSc, I have not done anything else. Then I did diploma sales and marketing. Okay. So this is also possible. Yeah. If I had done MBA in my time, okay, then probably today I would have been a CEO. कि मैं CEO नहीं हूँ वो बात नहीं है. बात यह है कि मैं कहाँ काम करता हूँ. तो मैं वहाँ काम करता हूँ जहाँ पे 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं. तो वहाँ पे बहुत लोग हैं जो CEO बनना चाहते हैं. You understand? And then I can go into a smaller company where there is only 1,000 people or 900 people working. I can easily become a CEO today. My choice. Right. Got it. तो कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड से भी अगर कोई ग्रेजुएट होता है तो 100% क्या वो भी सेल्स कर सकते हैं? I can give you examples of in my company. Okay, there are general managers who are BA English. के बाद नौकरी सेल्स करते करते उन्होंने कुछ डिप्लोमा कर लिया, you know, and then finally after 10 years they did some MBA course, PG diploma and those kind of things. They are there. INSEAD में से कोई किसी ने कर लिया तो, you know, today they are general managers. It's a good career. मैं हूँ सेल्स में इसके लिए बोल रहा हूँ कि गुड करियर है, ऐसा नहीं है. You know, if the children are listening and some today children are very smart, you know, they can I know that because I have been into the education industry also. And you know, the kind of questions children ask me are very, very absolutely, sometimes I am you know, surprised, not able to answer on the spot. But salesman not answering on the spot is something very difficult to digest, right? But ऐसा हुआ है, children ask and you know I am not able to answer, but I immediately come back to them. You know, so sales का जो फंडा है वो वही है कि you please ensure that you are with your customer. Come back. If you don't know, it's all right if you don't know. Hear him first of all, and then come back. So certain things which are important for anybody, कोई भी कोर्स कर ले, BA कर ले, BCom कर ले, MSc कर ले, BSc कर ले, you know, I'm saying all that is fine. Once you get into this field, then upgrade yourself in the knowledge of sales. Who are your best sales enthusiasts? You know, you have some mentor kind of a thing. You have to look for those people, read about them. How did they do it? In your own industry, in your own work area, you will have leaders who would have done something. What are their qualities? वो देखो, काम आएगा. Most importantly, 2-3 attitudes which are very important for the students, whatever course they have done. कभी कभी क्या होता है, इंजीनियरिंग MBA करने के बाद मेरा एटीट्यूड ये हो जाता है कि भाई मैं तो मैनेजर बनना ही बनना है, लेकिन आपने अगर वो स्किल नहीं है, लिसनिंग एबिलिटी नहीं है, एम्पैथी नहीं है, कस्टमर सेंट्रिक ये नहीं है अप्रोच, तो आप IIM अहमदाबाद से भी आए हो, आपको कुछ नहीं होने वाला है. So what you need to do is, सेल्स के अंदर में what is required is फल का अपेक्षा मत करो.
तो मैं कह रहा हूँ कि वो गीता का पाठ आ जाता है, सो कुरान में भी और बाइबल में भी ऐसा बोला गया होगा, बट आई नो गीता एंड सो आई एम सेइंग दैट ओके, रीड गीता। गीता में जो बोला गया था है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि आप कर्म किए जाओ, फल की अपेक्षा मत करो, बट टारगेट रखना है, माइलस्टोन रखना है, प्लानिंग करना है, वो जरूरी है। सो दैट्स द एटीट्यूड। अगर ये है तो पेशेंस आ जाएगा, लिसनिंग स्किल्स आ जाएगी, ओके, एंड देन यू विल हैव, व्हाई, बिकॉज इन सेल्स में 11th आवर हिचेस बहुत आते हैं। आपके कस्टमर फाइनल करने वाले हैं, आज आप वो एक्सपेक्ट करके बैठे हो और वो बीमार हो जाते हैं सपोज, तो आप उस दिन नहीं कर पाओगे, आपका टारगेट नहीं हुआ, तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए। ये सब सिखाता बहुत है सेल्स। ये अगर एटीट्यूड बिल्डअप करना है तो स्पोर्ट्स में जाइए, आप कोई भी कोर्स कर लो, लेकिन स्पोर्ट्स, कोई गेम्स खेलिए, एक्सपर्टीज गेम्स में, कोई एक गेम में एक्सपर्टीज लीजिए, चाहे आप भले ना जीतो। बेस्ट वे टू लर्न ऑल दिस इज दैट स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाएगा पहले। स्पोर्ट्स से, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स से बेसिकली वो राइट एटीट्यूड आ जाएगा जो आपको सेल्स में सरवाइव करके और प्रोग्रेस करने के लिए हेल्प करेगा। सो संदीप जी, आपने जो कहा कि आपकी जो जर्नी है, तो पास्ट में जिस तरह से करियर डिसीजंस लिए जाते थे, और जब सेल्स का तभी जो नेचर था या स्कोप ऑफ रोल था, तो वैसे आज तो बहुत चेंज हो गया होगा, और पेंडेमिक के बाद बहुत चेंजेस हो गए होंगे। तो आप क्या सलाह देंगे स्टूडेंट्स को कि क्या चेंजेस हुए हैं और बच्चों ने खुद को कैसे अभी अपने आप को ट्रेन करना चाहिए जो बदलाव आ रहा है उसके लिए? ओके, सो देखिए, कोई भी करियर है उसके अंदर में बदलाव आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जनरलाइज करके बोलूंगा कि whenever you are choosing any career, supposing you are an engineer and working in a factory rules and factory law में बदलाव आएगा। प्रोडक्ट रॉ मटेरियल मिलता है कहाँ से और कहाँ अभी मिलना चालू हुआ, मार्केट्स कैसे चेंज हुई, उसके मुताबिक बदलाव आया। तो सिमिलरली सेल्स के अंदर में बदलाव आएगा। सेल्स में जब बदलाव आता है, सेल्समैन सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड रहता है compared to any profession. Even doctors are not so prepared in change in market. Salesmen are much more prepared in the change in market if they are updating themselves. जैसे मैंने कहा कि update करना बहुत है. And they are always on the ground. Always on the ground, always in the market, always with the customer. So नई चीजें डिमांड आती रहेगी. So salesmen are prepared. But having said that, आप जो भी इंडस्ट्री में हो, वो इंडस्ट्री में कैसे चेंजेस आते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री, बिकॉज इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, कोई भी इंडस्ट्री नीचे आएगी। आप जस्ट फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, टेलीकॉम के अंदर में बूम आ गया, तो ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स पीपल स्टार्टेड गेटिंग ह्यूज सैलरीज। बैंकिंग में चेंजेस आया था जब आईसीआईसीआई शुरू हुआ था, तो sales managers in ICICI used to get much higher salary than any other banks. Very late, Axis Bank and all those banks have come down very late, improving their salesmen. So banking industry में भी बदलाव आया। वहां पे अभी देखिए कि most of the branch managers are sales managers. पहले branch manager टैली करते थे और अकाउंटेंट टाइप के थे, अभी ऐसा नहीं है, अभी सब सेल्स मैनेजर थे। तो सिमिलरली एनी इंडस्ट्री, आप आईटी इंडस्ट्री में हो और सेल्समैन हो, आपको आईटी में क्या चेंजेस आता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, वो जानना जरूरी है। सो इट्स अ प्रोफेशन, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशन इन इटसेल्फ। इट्स अ साइंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइंस वंस यू गेट इनटू इट, ओके। अपग्रेड योरसेल्फ एज पर दैट। सेकंड, जनरल अपग्रेडेशन जो है वो मैं कहूंगा कि जैसे हमारे जैसे लोग, कंप्यूटर ही नहीं था, तो हम वहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड वो सब हम वहां से सीखे हैं, एंड देन वी वेंट इनटू ओरेकल, वी हैव गॉन इनटू एसएपी। देयर इज अ करियर, कंप्लीट करियर ऑफ सेल्स एंड डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन एसएपी। आपका 10 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप डाइवर्ट कर सकते हो आपका इंडस्ट्री। यू कैन गेट इनटू एसएपी ऑफ लर्निंग द फंडामेंटल्स ऑफ इट।
So there are three types of sales. Anybody is interested, you can also further get into this and Google it. One is direct sales. The other is industrial sales. Okay, the third one is about your customer distribution, retail. Channel. Okay. Now those channels have also expanded. Now retail has expanded from general trade to modern trade to e-commerce. Now it has gone into e-commerce. Yeah. E-commerce sales is completely different. So जब pandemic की आप बात कर रहे हैं तो you would have seen that food delivery, Swiggy and all those things have started. Your Flipkarts, your Amazons, those things have started. जब वे start हुआ था तो कुछ भी नहीं था. Right. अब pandemic में everybody realized that contact में रहना जरूरी है. And sales profession ऐसा है कि आपको हमेशा ही contact में रहना जरूरी है. आप चाहे ऑनलाइन से करो चाहे फिजिकली करो. तो आई वुड ओनली गिव एन एग्जांपल. पैंडेमिक के अंदर में डॉक्टर्स का एग्जांपल दूंगा कि ड्यूटी कॉल्स दे आर देयर इन दैट हॉस्पिटल, दे आर नॉट एट होम. तो सेल्स में भी ऐसा है. पैंडेमिक में ड्यूटी कॉल्स देन यू आर देयर. द फूड इंडस्ट्री वाले सेल्समैन सब मार्केट में थे. रिस्क था ऑफ कोर्स, बट दे वर इन द मार्केट मेंटेनिंग एट डिस्टेंस. ओके, but 90% of salesmen, including myself, were working from home. We are still working from home. Last 2 years पहले sales यानी we were not able to reach customers up country. में बड़े बड़े शहरों तक हम जा सकते थे. फ्लाइट वहां तक है, फिर एक आध ट्रेन पकड़ के चले गए तो वहां तक जा सकते थे. आज पैंडेमिक में क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी बहुत खुल गई. अभी ये वीडियो कॉल हो रहा है तो इस तरह से हम लोग हर एक टाउन के डिस्ट्रीब्यूटर्स, हर एक टाउन के कस्टमर्स को हम रीच आउट कर सकते हैं. सो इंडिया हैज, और वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉल लाइक दिस. आई कैन रीच आउट टू एनी ऑफ माय कस्टमर्स एनी टाइम. एडवांटेज भी है हमारे लिए. बिजनेस होगा, बिजनेस हो भी रहा है. पेंडेमिक में बिजनेस, मार्केट बंद हो गई थी तो थोड़ा बिजनेस डाउन हो गया, लेकिन उसके बाद वापस बिजनेस सेम लेवल पे आ गया. यू कैन इमेजिन, मार्केट चालू है लेकिन बहुत सारे बाहर नहीं जा रहे हैं. सेल्समैन बहुत बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन धंधा हो रहा है. तो ऐसे ही हो रहा है. अभी जैसे बात कर रहे हैं वैसे हो रहा है. सो आई थिंक पैंडेमिक और द चेंज which is brought in has brought in positive things only. Okay, there are of course it was a difficult period. Adaptation by many people could not be done because of the technological disadvantage they had, but everybody learned. आप एटीएम करना सीख गए. आज बच्चों को मैं बात करूं कि एटीएम, एक जमाने पे एटीएम नहीं था या मोबाइल नहीं था, तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. हम पोस्ट कार्ड में सेल करते थे, रिसीट भेजते थे, कितना इतना हुआ है, रिपोर्ट मेरा ये है. पोस्ट कार्ड, आई मीन दे डोंट इवन नो पोस्ट कार्ड. सो चेंजेस के साथ हम चेंज हुए. टुडे वी आर आल्सो टॉकिंग टेक्नोलॉजी. ओके, so metaverse, just to give you an example. Yes. अभी now metaverse आ रहा है, Facebook and Meta, right? This is going to change the world further. सेल्समैन के लिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज मैं वैसा मानता हूँ. क्यों? क्योंकि आज मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि प्रोडक्ट जो मेरा है वो प्रोडक्ट के अंदर में मैं ऐसा, ये जो QR कोड में ऐसा डालूं कि कोई वहीं पे स्कैन करेगा तो उसको वहां पे वर्चुअल प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा. आई नीड नॉट डू एनीथिंग. टुडे ऑल्सो आई हैव अ पैम्पलेट, आई कैन गिव यू द पैम्पलेट. आप जब उसको पैम्पलेट को स्कैन करके देखोगे तो आपको उसमें वीडियो नजर आएगा. कंप्लीट एक एग्जीबिशन जैसा पूरा नजर में आएगा. वो टेक्नोलॉजी हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट. आई नो दैट माय कंपटीशन डजंट नो इट. आई हैव एन एडवांटेज. So metaverse is going to change it that way that ये तो मैंने प्रोडक्ट की बात करी. मेटावर्स मैं आपकी बात कर रहा हूँ. आज हम दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पे पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या चिल्ड्रन के साथ भी बात करेंगे. हम स्टूडेंट्स के अंदर बैठ के बात करते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स को फील होगा as if I am in the classroom. उनको ऐसा फील होगा. तो संदीप जी, very informative and very insightful information आज आपने स्टूडेंट्स को दी है. So
what I would like to ask you, what is one single advice that you would like to give to students who are aspiring to join sales as a career and their parents? Before advising, I think I will tell the students only one thing, that today you may not be thinking that you are talking, you're able to talk, sales में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. Be very clear that कोई भी career choose करोगे, मेहनत करनी पड़ेगी. So if somebody is telling you that sales में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ये होना करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है. मेहनत सब जगह पे सेम. Parents should think that okay, today my son daughter is not able to talk so much. She is not talking, but he is not talking so much. Then what happens? How can they get into sales? I was not talking much. So as children, don't look at them as a 17, 18-year-old person and then judge them in saying that okay, whether they will be able to do sales or not. Yes, there will always be a flair. There will be children who are talking very good, so gift of the gap जो बोलते हैं, तो उनको तो definitely sales and sales management में जाना चाहिए. Right. But the others also, if they are thinking that they should get into sales, then I am 100% sure they should be able to do well, because मेहनत करने से किसी को भी achievement होता ही होता है. जो भी you want to achieve, you should be able to achieve. एक चीज बहुत क्लियर है सेल्स में कि आप ठान लो कुछ तो आप कर सकते हो. तो आप whatever course you're doing or you want to do, whatever career you want to take in, I would, since I am into sales, I am saying that you should get into sales. It's much more flourishing kind of a profession. Second advantage which I would share with students is that they can switch industries very easily if they are able to connect with the customers. Not in most of the professions, you will not be able to switch so fast. Here, as I gave you examples of telecom industry or banking industry, people have switched industries. I have switched industries 4 times. Wow. So this is a big advantage for anyone. Right. Third advantage is that if you are patient enough to listen to people, you are empathetic to people, you like to talk to people at least, okay, to some extent, then take sales, okay, grow from it. You will be able to do it. Because these are some attitudes which are inborn. It cannot be developed in 5 years time. Right. कर भी सकते हो, लेकिन जैसे भी बहुत लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में आने के बाद जो इंडस्ट्री को चाहिए वैसे चेंज कर लेते हैं, बट वो कम लोग हैं. बट पहले से अगर ये पेशेंस है, आप लिसनिंग एबिलिटी है, देन यू कैन डेफिनेटली अचीव. सेकेंड पीस ऑफ इट, सेकेंड लेग ऑफ इट, पेरेंट्स थिंक दैट ओके ये स्टूडियस नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो सेल्स में जाना चाहिए. ऐसा नहीं. अच्छा किया है तो अच्छी निश इंडस्ट्रीज में जाइए. Why you can't say today, आप स्पेस में जा रहे हो, इतनी सारी स्पेस की टेक्नोलॉजी है जो दिख रही है. तो आर्मामेंट सेल्स इज समथिंग एल्स. आर्मी में भी सेल्स मैनेजर्स हैं. टेक्निकली वो सेल्स करते हैं. People think that they're some technical manager. They are salesmen. It's how you look at them. Right. More important, right? So I would advise parents, let them choose, let the students choose this profession if they are mobile, if they have the ability to listen to people, empathize with people, and if they are ready to plan themselves and upgrade themselves. There are three, 4 things which are there, which are required as skills. Absolutely, go ahead and take it. Right. There is a huge growth potential. So natural है कि any profession will have growth. यहाँ पे आप you can open your doors in the first 5 years. Depends आप कितना काम करके क्या achieve करते हैं. Right. I for sure
I was not like this. आज ये topic के ऊपर मैं 4 दिन बात करूँ. I can talk about this for 4 days on and on and on. But in a very short thing, I can say that okay, I was not talkative. People have that misconception today that only if you have a gift of gab then you get into sales, otherwise don't. Or only if you are studious you become engineer. No, if you are studious you will get into IIT. Yeah. Of course. But then after IIT what? Correct. You need to be happy. Correct. If you are happy doing that, yes, then fine, good. But then if you are happy meeting people, if you are happy convincing people, try to do that. Today also children can try and do that. Definitely. This is a big spoken. So finally, what I said earlier, I'll come to that. Gita padhiye. कर्मण्येवाधिकारस्तु. सेल्स में हमेशा सब कुछ मिल जाएगा ऐसा उम्मीद रखना जरूरी है, लेकिन सब कुछ मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है. उसके लिए मेहनत करनी, प्लानिंग करना और अचीव करना. तो छोटी छोटी अचीवमेंट में सेलिब्रेट करना वही सबसे बड़ा. इसके लिए मैंने स्पोर्ट्स के साथ कंपेयर किया. टेनिस में 1 पॉइंट मिला तो सेलिब्रेशन हुआ. तो एनी स्पोर्ट्स, आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, सेलिब्रेशन है. छोटी छोटी सेलिब्रेशन करते जाओ और अचीवमेंट करते जाओ, एक बार बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा. दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इफ यू वांट टू गेट इनटू सेल्स. राइट नाउ अचीव कीजिए कि 60 मार्क्स से 65 मार्क्स आया, 70 से 75 मार्क्स आया. सेलिब्रेट. If you are able to do that and if you are enjoying that and you are able to convince your friends, you are a sales manager. Awesome. Great, Sandeep ji. Thank you very much. आपने आपका टाइम दिया and बच्चों को गाइड किया है about sales and sales career. We really appreciate that. And students, I hope you have taken your notes and the key point what I would like to summarize what Sandeep ji has said is like right attitude. If you want to be in sales, you need to have right attitude, willingness to travel, be flexible in terms of understanding your product, yourself, your company, your competition, okay, and never give up attitude. So and listening, most importantly. Sandeep ji has really highlighted things that if you can talk well, that means you can sell well. That's a myth. So you need to listen well and understand customers' need, and then offer your products or service which will match customers' need. That will make you successful. So with this, I wish you all the very best in your career decision. And Sandeep ji, thank you very much for your time. All the best to the students, the parents, who are listening to this. Thank you very much.